Tapping into its black gold reservoirs, petroleum industry drives and directs the pulse of global economy. Every day, oil and gas companies extend their exploration nets in a quest of natural resources to feed the energy-hungry world. Resource-rich Pakistan draws maximum investment from oil companies to fulfill its domestic energy needs. Petroleum industry enjoys a significant economic influence due to its enormous potential. The largest fraction of oil and gas production comes from Sindh, the province that has witnessed an exponential growth in extractive activities over the last few years. However, the right to explore petroleum demands responsibilities to protect land and lives from physical, chemical and biological hazards. The 2007 petroleum policy legally bounds oil and gas operators to invest a specified annual sum and production bonus on social welfare projects, offer training and employment to Pakistani nationals, and development of coastal areas. Due to its economic benefits and regulatory oversight, petroleum industry generates staggering profits at the expense of the public health and the environment. Blatant violation of CSR and other regulations governing oil and gas exploration and production is threatening the survival of local communities to an alarming extent. Negative impacts and risks of the energy chain from extraction to consumption and disposal of waste leads death and devastation in its wake. Exploration and production of petroleum emits hazardous poisons that are improperly handled and irresponsibly discharged into the soil, water sources and the air. Persistent exposure to contaminants is impairing human immune system and causing infectious diseases and neurological complications. असांजे ॻोठ में मसला इहा आहे त पहिरीं शर्त पाणी कोन्हे असां तमामु मजबूर आहियूं असांजे लाइ कंपनी कुझु बि कोन करे सघियो आहे पहिरीं त ॻाल्हि असांजी पाणीअ जी आहे तंहिंखां पोइ असां वटि जेका बदबू आहे सो तमामु असांखे हिन बदबू खणी ॾिनो आहे जे कंपनी असांजे लाइ सोचे त असां ग़रीबनि जे लाइ मुनाफ़ो करे त हथ जी महिरबानी जे न त असांजे लाइ कुझु सोचे असांखे अहिड़ो अहिड़ो थो प्रेशर जंहिं महिल ॾियनि तेॾी महिल असांजा बचिड़ा असांजूं जायूं असांजूं जॻहियूं तबाह थी थियूं वञनि उन जो ज़िम्मेवारु केरु आहे न असांखे सिपला वाटर आहे न असांखे हिन महिल गैस आहे तव्हां ॾिसो त का नलकी असां वटि आहे को सिपला वाटर जो पाणीअ जो ढुक आहे असांजो माल सूरनि में असांजा माण्हू सूरनि में बसि बसि करे वटि जो प्रेशर ॾियनि था असांजे बचिड़नि खे अहिड़ियूं अहिड़ियूं किनियूं बीमारियूं थियूं थियनि. Drilling and seismic activity is causing severe psychological problems in adults and children and irreparable damage to houses. The toxic leak into soils and nearby streams is also poisoning the flora and fauna of the region. These questionable environmental practices extend to irreversible loss and destruction of land due to desertion of extraction sites without proper plugging and remediation. पानी असल में सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है हमारी पानी ही हमारी ज़िंदगी है पानी से हमारे सारे मसले हैं पानी ही हमारी खेतों में पानी जाता है हम लोग सब पानी पीते हैं ज़िंदगी है हमारी पानी अगर हमारा पानी साफ़ नहीं हुआ फिल्टर नहीं हुआ तो क्या पता आइंदा 3-4 साल बाद पता नहीं हमारा क्या हाल है. इन्होंने हमारे इलाके में कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है ना ही तरक्याती काम करा है सिर्फ नाम नहाद एक इलाके को थोड़ा सा खुश करने के लिए एक जो है बस चला दी है लोकल और डिस्पेंसरी है वो भी उनके परमानेंट मुलाजिम के लिए है उसी में सिर्फ 4 दिन की ओपीडी चलती है जिसमें 60,000 महीने की दवाई आती है 2 नंबर वो भी 1 नंबर दवाई नहीं है उसमें भी वो सही फैसिलिटी नहीं है. इलाके को किसी किस्म का भी इन्होंने रोज़गार नहीं दिया बड़े एहतजाजी मुजाहरे वगैरह यहाँ पे स्टैंड लिया लोगों ने तकरीबन टंडो आलम और कुन्नर को मिला के 80 लोग हैं उन 80 लोगों को ना ही इन्होंने टेक्निकल सर्टिफिकेट दिया और ना ही फील्ड के अंदर उनको रोज़गार दे रहे हैं. जहाँ से तेल और गैस निकलता है वहाँ के लोग तरक्की करते हैं और आगे निकलते हैं हम यहाँ पे दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं. Challenging this ruthless exploitation of land and lives in the name of exploration.
Oxfam GB, in partnership with participatory development initiatives, launched community mobilization and networking on corporate responsibility in Sindh. This multi-level project focuses on working with communities and groups to reform government policies, improve corporate practices, and influence investment decisions. यह एक लोकल लोगों को बताने के बाद हम इनका एक लिंक बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्हीं इशू पे अवेयरनेस करने के लिए हमने कंसल्टेटिव वर्कशॉप्स किए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन की, सिविल सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सहाफ़ी मीडिया के तमाम दोस्तों ने पार्टिसिपेशन की। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे न सिर्फ वर्कशॉप किए, बल्कि एक नेटवर्क बनाया वहाँ के लोगों का जो इन इश्यूज़ पे काम करना चाहते हैं, जो इस इश्यूज़ पे लोकल लोगों की मदद करना चाहते हैं। जिस मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों में करारदादें पास हुई हैं कि जी इस प्रोसेस को बेहतर बनाया जाए और कम्युनिटी वेलफेयर की जो अमाउंट है उसके खर्चे में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को शामिल किया जाए। हम समझते हैं कि एक वेव ऑफ अवेयरनेस शुरू हुई है जिसको शायद अभी कोई रोक न सके। इससे लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा और उनको राइट्स मिलेंगे, और हमारी खुशी एक इदारे के हवाले से यही है कि लोकल लोगों को उनके राइट्स मिलें। Energy and economic development demands a holistic approach that involves transparency, good governance, and sustainability. By adopting ethical practices and policies supported by fair fiscal and regulatory frameworks, petroleum companies can lift communities out of economic and environmental quagmire. Oxfam GB and PDI's project has influenced the companies to reach beyond the fence that separates them from communities. At policy level, amendment of existing legislation is being advocated to balance profitable progress with social responsibility. The project has been imperative in raising awareness in communities to know and assert their right to equitable share in development funds and production bonus for community education, healthcare and employment. The collaborative initiative has spurred outreach and exchange of dialogue between companies, government and communities to broaden their objectives and perspective. Positive shift in corporate practices has urged petroleum companies to expend lawful funds on community development and offer jobs to local people. यहाँ जो कैंपेन आपकी चली है, मैं एक्चुअली ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ असेंबली के मेंबरान को भी कि जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी इसी तरह से रेजोल्यूशंस आए हैं, इसी असेंबली में रेजोल्यूशंस आए हैं जिसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए थे लोगों ने कि जो मल्टीनेशनल हों, जो भी हों, अगर वो कोई एग्रीमेंट्स करती हैं तो एग्रीमेंट्स पर वो पाबंद नहीं रहती। तभी मेंबरान असेंबली ने मुनासिब समझा कि हाउस में ये चीज़ लाई जाए और ये कहा जाए कि हुकूमत, फेडरल हुकूमत जिन्होंने उनके साथ मुआहदे किए हैं, वो इंश्योर करे कि 1% तो कम से कम खर्च करो जिसका आपने पहले वायदा किया है। होना तो उससे ज़्यादा चाहिए। 1% इज़ सो लिटिल। अपने ज़मीन से निकली हुई नेमत पर हम क्यों नहीं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? इट्स अ टोटल लॉजिकल डिमांड। Government has to ensure implementation and evaluation of rules and regulations at every level to compel this commitment to change. However, the ravages of oil addiction still run wide and deep as petroleum sector trades black gold for bleak landscapes and lives. While the project has paved the way forward for a sustainable and equitable energy future, it has also raised many questions. How long will these natural resources remain a cursed blessing? How long will the place and its people bear the brunt of this destructive development? How long will local communities lose out on their fair share of progress? It's not too late for change, but it may be very close. The time to act is now.